Namaste. Today's lesson is on characteristics of living organisms and non-living things. आज हम चर्चा करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. We will discuss the characteristics of living organisms and non-living things on the basis of food, stimuli, locomotion, respiration and reproduction. हम डिस्कशन करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, लेकिन उस डिस्कशन का आधार क्या होगा? डिस्कशन का आधार होगा फूड, खाना, स्टिमुली, चेंज इन द एनवायरनमेंट, लोकोमोशन मतलब ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं या नहीं मूव करते हैं, रेस्पिरेशन वो लोग सांस लेते हैं या नहीं लेते हैं, रिप्रोडक्शन वो बच्चों को जन्म देते हैं या नहीं देते हैं. Now the first basis of discussion is food. So the question arises, do living organisms need food? हमारा पहला आधार है डिस्कशन का खाना या फूड. तो सवाल ये है कि क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने की जरूरत होती है? Do living organisms need food? So we have living organisms who are capable of synthesizing their own food. Then there are organisms who depend on the organisms who synthesize their food. Now, if you can recall chapter 1 and 2, we discussed about the autotrophs and the heterotrophs. Autotrophs, such as green plants, can synthesize their own food by a process known as photosynthesis. During photosynthesis, the green plants use carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll to produce carbohydrates and release oxygen as a byproduct. Autotrophs जैसे कि green plants photosynthesis के द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं और इन ऑटोट्रॉफ्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं. लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के द्वारा बनाए गए खाने पर और प्लांट्स के ऊपर निर्भर करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने के लिए. तो जो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ प्लांट से अपना खाना लेते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं. जो दूसरे एनिमल्स के मीट और फ्लैश पर डिपेंड करते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं. जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स और एनिमल फूड दोनों खाते हैं उनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं. और जो मरे हुए चीजों को खाते हैं उनको हम डिट्रिटिवोर्स कहते हैं. और जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो मरी हुई चीजों को सड़ाते हैं, गलाते हैं, डिकम्पोज करते हैं. So we have organisms who are producers and we have organisms who are consumers. The autotrophs are producers, heterotrophs are consumers. अब हम ये देखते हैं आगे कि किस तरह से यहाँ producers या autotrophs किस तरह से खाना प्रोवाइड करते हैं heterotrophs को, और heterotrophs कौन कौन है और वो खाना कहाँ से लेते हैं. Let us look at this small example of a food chain. Here, the green plants are the producers. They are synthesizing food by using water and carbon dioxide in the presence of sunlight by a process photosynthesis. Now, these plants, grasshopper. Here we have taken the example of a plant that is grass. Now, grasshopper is consuming the grasses. Grasshopper is a heterotroph. And it is consuming the grasses. But at the same time, it is also a herbivore because it is eating plant only or grass only. So grasshopper in turn is eaten by a mouse. Mouse is in turn eaten by a snake. Snake in turn is eaten by a eagle. Now, what we find here? We find that producers provide energy. Okay? Producers provide energy in the form of food to the heterotrophs. And producer here are the green plants and heterotrophs are
grasshopper, mouse, snake, and eagle. Now, when herbivores die, when carnivores die, when omnivores die, their body is decomposed by the decomposers called fungi. And one such example of a fungi is mushroom that we see in our surroundings during rainy season. So our question is, do living organisms need food? Yes, they need food, and they depend on autotrophs and on each other for drawing nutrition for work and growth. Now, our next basis of discussion is, do living organisms respond to stimuli? Now, what is stimuli? Stimuli is any kind of change happening in the environment. हमारा अगला बेसिस है डिस्कशन का कि क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्स दिखाते हैं. तो फिर सवाल आता है कि स्टिमुली क्या है. स्टिमुली का मतलब होता है कि हमारे आसपास में, हमारे मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास में जो भी चेंजेस आते हैं, चाहे वो मौसम का चेंज हो, चाहे वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया गया चेंज हो, चाहे वो हीट हो, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे वो टच हो, ये सारी चीजें चेंज में आती हैं. तो एनी चेंज ऑकरिंग इन द एनवायरमेंट कैन बी कॉल्ड एज अ स्टिमुली. और उस चेंज को झेलने के लिए, सहने के लिए, या फिर उस चेंज को समझते हुए आगे बढ़ने के लिए हम जिस भी तरह का अपना एक रिएक्शन दिखाते हैं उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेंगे. जैसे कि छुई मुई का पौधा होता है, अगर उसके लीव्स को आप टच करते हैं तो वो क्या करता है, सिकुड़ जाता है. तो हमारा टच करना हो गया स्टिमुली, और छुई मुई पौधे के लीव्स का सिकुड़ना हो गया रिस्पॉन्स. सो डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली? We have seen one example here. That is the example of a touch me not plant. When we touch the leaves of a touch me not plant, the leaves shrink. So touch me not plant shows response to stimuli. Similarly, another example of a response to stimuli is, we are holding a frying pan over a fire. If the frying pan becomes hot, then what we do? We feel the heat. Feeling the heat is the stimuli, and then what happens? We release the pan from our hand. So releasing the pan is the response. Similarly, we know that sunflowers move towards the sunlight. Sunlight is the stimuli, and movement shown by the sunflower towards the sunlight is the response. The next basis of discussion is locomotion. Do living organisms show locomotion? Locomotion का मतलब है movement. क्या living organisms movement दिखाते हैं? Let us understand this point by taking some examples. If you can see the picture here, अगर यहाँ पर दिए गए पिक्चर को आप देख रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे पिजन, ड्रैगन फ्लाई, लेडी बर्ड, देन कॉमन हाउस फ्लाइज, ईगल. ऑल दिस एनिमल्स दे फ्लाई. ये सारे एनिमल्स, पिजन, ड्रैगन फ्लाई, ईगल, ये सारे क्या हैं, फ्लाई करते हैं. किस लिए? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. नेक्स्ट इज वी हैव राइनोसेरस, काउ, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ. हमारे पास ये कुछ और एनिमल्स हैं जैसे कि राइनोसेरस, काउ, टाइगर, एलिफेंट और जिराफ. क्या ये भी मूव करते हैं? हाँ, ये भी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. उसी तरह जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि शार्क, ईल, व्हेल, सी लायन, गोल्डफिश एक्सेट्रा. Do they move? Yes, they move from one place to the other in the aquatic habitat by swimming.
Then we have organisms like crocodile, lizard, crab, turtle, tortoise. Do they show movement? Yes, they also show movement. They crawl on the land and they swim in water. So living organisms like birds, like rhinoceros, like aquatic organisms, animals, they either fly, walk, run, swim and crawl to move from one place to other, to locomote from one place to another. So we have seen the examples of living organisms showing locomotion and we have discussed about it. Next basis of discussion is, do living organisms carry out respiration? But then the question is, what is respiration? क्या living organisms respiration करते हैं? तो सबसे पहली बात आती है कि respiration क्या है? So the term respiration denotes the exchange of the respiratory gases between the organism and the medium in which it lives, and between the cells of the body and the tissue fluid that bathes them. अब यहाँ क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अपने एनवायरनमेंट के साथ आदान प्रदान करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये जो ऑक्सीजन लिया जाता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के हर सेल में जाता है, वहां इसको यूज किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट गैस सेल से निकल के फिर हमारी बॉडी से बाहर जाता है. तो जब गैसेस का एक्सचेंज होता है रेस्पिरेशन के लिए, जैसे कि गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, देन उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहेंगे. तो क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं? तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. वी हैव हियर द एग्जांपल ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. Here we have the example of amphibians, example of insects, example of fishes, and example of human being. If you look at the image here, we find that all the living organisms shown in this image, they take in oxygen and give out carbon dioxide. So they are carrying out respiration. अगर हम इस इमेज को देखेंगे, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हो गए, एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोचेस हो गए, फिशेस हो गए, या हम लोग हो गए, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. ठीक है, तो there is exchange of gases in various organisms and they show respiration. Now the next point is, do living organisms reproduce? अब यहाँ देखते हैं कुछ प्लांट्स का एग्जाम्पल लेकर के क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं. ये एक पोटैटो का प्लांट है, ये रिप्रोड्यूस करता है, नए पोटैटो को जन्म देता है, नए पोटैटो प्लांट्स को जन्म देता है फ्रॉम ट्यूबर. अनियन नए प्लांट्स को जन्म देता है फ्रॉम अनियन बल्ब. क्राइसैंथेमम जो फ्लावर है वो जन्म देता है नए प्लांट्स को बाई थ्रू द स्टोलन्स. And then colocasia gives rise to new plants by corn. So plants नए plants को जन्म देते हैं. उसी तरह animals के बारे में, dog gives birth to puppy, pig gives birth to piglet, lion gives birth to lion cub, then chicken gives birth to chick, donkey gives birth to foal, tiger gives birth to tiger cub. So what do we see in these examples? That living organisms such as plants, living organisms such as animals, they reproduce their young ones. Now let us come to the non-living things. Here we have some examples of non-living things like table, chair, glass, bus, buildings, pen, the sun, moon, cloud and mountains. And how do we know that living things? Now this is a work for you to find out whether all these substances that I have given you as a list of non-living things show living organisms characteristics or not. If they do not show these characteristics, then we will consider them as non-living. And if some of them show these characteristics of living organisms, should we call them living or not? Now you have to answer this question, and we will continue with this lesson in the coming days to understand more about the living and non-living things.